In the previous topic, we have already discussed weathering process. So here we have a topic which belongs to, or it has a link with the weathering, is called the mass wasting. So the movement of the mass or the movement of the material uh, from the top of the hill to the down valley areas. So or the foothill. So why? Because of the certain factors, but the most important factor is the gravity. So कशिश शक्ल की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, जब मटेरियल बुलंद इलाकों से या हाईलैंड से लो लैंड की तरफ मूव करता है और इवन टॉप ऑफ द हिल से वैली की तरफ मूव करता है, तो उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं या मास मूवमेंट कहते हैं. Now this actually movement, also known as the slope movement or mass movement, is the geomorphic process by which soil, sand and rock move down slope as a mass under the force of gravity. This is one of the most important factor in the movement of the mass, in the movement of the material, the gravitational force or the force of gravity. So उससे जो है material नीचे move करता है, and that is called the mass movement. In mass wasting, several factors and the processes contribute to the downward movement of the rock material under the force of gravity. Sometimes they have disastrous result on the local environment. So the other factors which are important for the movement of the material is the slope of the valley, the size of the valley, and the material within the movement. उसमें बोल्डर्स भी हो सकते हैं, उसमें सॉइल भी हो सकती है मूवमेंट में. इसी तरह से वो ग्रेजुअल स्लोप भी हो सकता है, वो स्टीप स्लोप भी हो सकता है. सेम इज़ द केस विद द साइज ऑफ द वैली. अगर वो वैली ब्रॉड है तो मूवमेंट में वो कोई रुकावट नहीं होगी, एंड इफ इट इज़ नैरो वैली है तो उसमें मूवमेंट में फ्रिक्शन होगा. सो ऑल दीज फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो है, बट अदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द वाटर. अगर वाटर उसमें मौजूद है उस सॉइल में, तो उसकी मूवमेंट फास्ट होगी, और अगर उसमें सॉइल में मॉइस्चर कम है, ड्राई है वो, तो उसकी मूवमेंट स्लो होगी. Now actually rock which is weakened by the weathering, particularly the process of frost action or frost shattering, can break away from the slope. So the upper area of the rock actually weakened by the process of frost action, और वो जो एरिया है अपर एरिया सॉइल का या अर्थ सरफेस की लेयर का, वो नीचे की लेयर से सेपरेट हो जाता है. सो इट मीन्स इट इज़ एक्चुअली इज़ वेरी क्लोजर टू द मूवमेंट. सो जैसे ही स्लोप अगर वो स्टीप स्लोप है तो मटेरियल नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. अ रॉक स्लाइड occurs when a block break off and move along a bedding plane or a joint. The most devastating rock mass movement is a rock avalanche, which can be triggered by an earthquake or torrential rain. So here in this slide we can see the material is actually already prepared for movement due to the frost action. और जब ये स्लोप से नीचे आया है तो उसमें वाटर भी शामिल हुआ, मेल्ट वाटर, और वी कैन सी द रॉक एवलांच, यानी इसमें मटेरियल जो है एवलांच में शामिल है. Whereas in this slide we can see the snow avalanche, यानी जो स्नो है वो भी स्लोप के ऊपर मौजूद है, माउंटेन स्लोप्स के ऊपर, और ये अर्थक्वेक की वजह से या मटेरियल जो उसमें मौजूद है उसका लोड जब बढ़ता है तो और इवन स्लोप अगर स्टीप है तो वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. तो इवन इस स्नो मूवमेंट में या स्नो एवलांच में बोल्डर्स भी शामिल होते हैं. सो दैट्स व्हाई इज वन ऑफ द वेरी डेंजरस टाइप ऑफ हैजर्ड. The speed of the motion depends on the angle of the slope and the material involved. Masses of material will start to move under the influence of gravity. This movement is also influenced by the pressure or the presence of water in the material. Any of these factors can drastically alter the equilibrium of the mass and cause of movement. Vast amount of unstable, unconsolidated and consolidated
material are found all over the Earth's surface, both on land and beneath the sea. So much of this is in slopes that are closer to their maximum angle. So in this slide, we can see if slope is gradual, then the movement is slow. If it is more than 45°, it is also a high slope angle and the material will move rapidly, like we have the mud flow during the eruption of the volcano. The melting of ice or rainwater mix with the lava and give the hazard of the environment. So इसी तरह से this is actually a very high angle which is actually one of the very important mass wasting type is called the fall movement और rock fall भी इसे कहते हैं. यानी इसमें closer to the 90 angle है और चट्टानें जो हैं ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में या साइज जो बोल्डर्स हैं उस सूरत में नीचे गिरती हैं. In mass wasting, the first type of movement is called the creeping. इसको हम soil creeping भी कहते हैं या creep movement भी कहते हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो slope है that is very gradual और इसमें जो movement है वो हमें नज़र नहीं आ रही. Movement इस तरफ है which is actually the downhill movement. जो zone of creeping है वो ये वाली है. यानी जो weathering जहाँ पर हो चुकी है या weathered rock पड़ी हुई है वो सरफेस के ऊपर है, वेयर एज जो नीचे वाला एरिया है विच इज एक्चुअली द एरिया नॉट अंडर द वेदरिंग प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई दिस जोन इज सेपरेटेड बाय द लोअर जोन और ऊपर वाली जोन जब नीचे वाली जोन से अलग हो गई तो उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है. सो इसमें मूवमेंट हमें ये फेंसेस की सूरत में नज़र आ रही है कि ये टिल्ट हो चुकी हैं. इवन वी कैन सी सम ट्रीज आर इन कर्व शेप या यहाँ पर जो ब्रोकन रिटेनिंग वॉल है जो प्रोटेक्ट कर रही है रोड को उसमें हम फ्रैक्चर देख रहे हैं. सेम इज़ द केस विद द क्रैक्स विच आर फाउंड ऑन द रोड सरफेस. सो उसमें आपको ये क्रैक्स नज़र आ रहे हैं. सो दीज आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द क्रीपिंग. So on any soil covered slope, we can find evidence of extremely slow down movement of the soil. This process is called soil creeping. Soil creeping is seen as fence, post and utility poles to lean downward and even shift measurably out of line. As we can see in this slide, the roadside retaining walls can buckle and break under the pressure of the soil creeping. Now, in the humid environment or the region of humid climate, a mass of water-saturated soil or weak shale may move down a steep slope in few hours in the form of an earth flow. So this slide is actually belongs to the earth flow और इसे हम जो है वो to some extent earth movement भी कहते हैं because the major part of the जो area है mountain का वो इसमें फ्लो में शामिल है. So it may affect a few square meter or it may cover an area of several hectares. The slopes have been saturated by heavy rain and the upper portion of the soil affected by rainwater penetration and shallow earth flow take place. It is bedrock of a mountainous region which is rich in clay. Earth flow sometimes involve millions of metric tons of bedrock moving like a great mass of thick mud. The earth flow become a hazard for those areas which are under the clay or the shale type of environment. So इस environment में जो human settlements हैं वो suffer हो सकते हैं.